Morning students. As in the previous class we have discussed about the linear programming problem. Now I am going to discuss question number 4. Minimize z equals to, that is the objective function, 3x plus 5y such that equation x plus 3y is greater than or equal to 3, comma x plus y greater than or equals to 2, and the constants are x comma y greater than or equal to 0. The feasible reason determined by the system of constants, the given equations and the constants. Now what we have to do, first we have to plot the graph for x plus 3y equals to 3, the corresponding equation of it. So we will just find out the 2 or 3 solutions and we will draw one graph for x plus 3y equals to 3, and then we can check any arbitrary point 0 0. After checking the arbitrary point, if it is true, suppose now 0 plus 3 into y, 0 plus 0 is greater than or equal to 3, that is false. So that will be shaded on the opposite side of that arbitrary point, as we are doing in the previous class 11th. In the same way, after shading the first, now the second equation we will plot it in the same way as a straight line after finding out its solution, and then we again choose an arbitrary point and we will shade it. After shading it, we see that this is an unbounded, यहाँ पे कोई भी हमें फिजिबल रीजन, कॉमन रीजन नहीं आ रहा है. जैसे प्रीवियस क्लास की क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें फिजिबल रीजन आ रहा था, लेकिन यहाँ कोई भी बाउंडेड रीजन या फिजिबल रीजन नहीं आ रहा है. इट इज़ ए अनफिजिबल और अनबाउंडेड रीजन वी कैन सी. सो द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ विल बी 3 0 0 0 0 2 and 3 by 2 1 by 2. That is the intersecting point. Now the corner points what we are having is 3 0 3 2 1 2 0 2. So what we do here, objective function is given to us, z equals to 3x plus 5y. So in this objective function, now I am going to substitute the value of the coordinates which we calculated from the graph a30. After substituting objective function value 9, after substituting this value, the value is 7. After substituting the point C, we are getting the value 10. As the feasible reason is unbounded, 7 will be here is the smallest, may be or may not be. For under such circumstances, here 7 is the least value, minimum value, and our minimum value was objective function z is equals to 3x plus 5y. So 3x plus 5y and our minimum value was 7. So our equation will become, we have to draw the graph of the inequality 3x plus 5y as it is minimum, so less than sign 7, and check whether the resulting half plane has points in common with the feasible reason or not. तो feasible reason के साथ कोई common point यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करना है. तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये दो इक्वेशंस का हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया है, वैसे ही इस इन इक्वेशन का 3x plus 5y लेस देन 7, इसको इक्वेशन करेंगे 3x plus 5y equal to 7. We will find out 3 different solutions, and after finding out the 3 different solutions, we will plot the graph line for this equation on the same graph and will show it by dotted lines. As we can see that there is a one intersecting common point for the 3 lines, and no any feasible region is common. No any feasible region is common. So it can be seen that the feasible region has no any common point. So 3x plus 5y less than 7, therefore the minimum value of z will be at 3 by 2 and 1 by 2. So
since I am teaching you through this already solved question, because on the whiteboard just I can't draw a straight line because it will just a sliding. I have to show you the graph paper. So already from the class 9th onwards you are plotting the linear equation, one variable, two variables, graph, equation of a straight line. So in same manner you have to plot the points, draw the graph. As in class 11th you are taking arbitrary point as 0, 0, and if it is true include that point in the shading portion. If it is false then you have to exclude that point while shading, and then you have to get the feasible region. If it is unbounded, this question is for unbounded. Now let's move to the next question. That comes to our question number 6. Minimize z equals to x plus 2y subject to 2x plus y greater than equal to 3, x plus 2y greater than equal to 6, x and y greater than equal to 0. So these are the following constraints given in the question. In the same way we will draw the graph line for 2x plus y equal to 3, x plus 2y equal to 6. दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, here पैरेलल लाइंस. अब यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स क्या आ रहा है, एक आ रहा है a, एक आ रहा है b. अनबाउंडेड रीजन. सो 6, 0 और 0, 3 पे हम जब वैल्यू निकालते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है. इट कैन बी सीन दैट द वैल्यू ऑफ z एट द पॉइंट्स a एंड b इज सेम. अब अगर हम कोई दूसरा ऐसा पॉइंट लें जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई करे, z इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y. सो इफ आई एम गोइंग टू टेक ए पॉइंट 2, 2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6. तो ये वैल्यू इफ वी टेक एनी अदर पॉइंट सच एज 2, 2 ऑन द लाइन, अगेन वी आर गेटिंग द minimum value z equal to 6. Thus the minimum value of z occurs for more than 2 points. 6, 0 पे भी minimum value 6 आ रहा है, 0, 3 पे भी 6 आ रहा है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो पॉइंट इस पे लाई करे अगर उसका वैल्यू मैं देखूं 2, 2 पे तो भी 6 आ रहा है. इसका मतलब द वैल्यू ऑफ z इज़ मिनिमम एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 6. इसलिए x प्लस 2y इक्वल टू 6 पे जितने भी पॉइंट्स है, लाइन कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, हर एक पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो आपका उस जगह पे, उस पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. Minimize and maximize both z equals to x plus 2y subject to the equations x plus 2y greater than equals to 100, 2x minus y less than equal to 0, 2x plus y less than equals to 200, and x y greater than equal to 0. So now these are the constants. 1, 2, 3 equations are given. So in the same way we have to plot the 3 points, 3 equations graph lines. आफ्टर प्लॉटिंग एंड शेडिंग, यहाँ आप देख रहे हैं डायग्राम में सिर्फ एक कॉमन पार्ट शेडिंग किया हुआ है, आप ऐसा नहीं करेंगे. पहला स्ट्रेट लाइन बनने के बाद, पहला इक्वेशन का ग्राफ लाइन बनने के बाद आर्बिट्री पॉइंट्स सेलेक्ट करके आप एक वर्टिकल लाइन से शेड कर सकते हैं, दूसरे वाले का हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर सकते हैं, तीसरे वाले का स्लैंट लाइन से या डॉटेड से शेड कर सकते हैं, और उसके बाद जो कॉमन पॉइंट, कॉमन जो शेडेड एरिया रहेगा वो आपका फिजिबल रीजन होगा, जैसे कि खाली यहाँ पे फिजिबल रीजन ही दिखाया है. सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट. सो नाउ पॉइंट्स आर, वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द ग्राफ पेपर. A 0, 50, B 20, 40, C 50, 100, C 0, 200. तो ये हमारा क्लोज्ड रीजन है, फिजिबल रीजन, जो कि हमारा बाउंडेड है और फिजिबल रीजन है. तो इन सभी पॉइंट्स के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y, उसके लिए हम एक एक करके ये सभी कॉर्नर पॉइंट्स का वैल्यूज़ निकालेंगे. हम देख रहे हैं कि 0 और 50 पे 100, 20 और 40 पे भी 100, 50 और 100 पे 250,
0 और 200 पे 400। तो हमको इस क्वेश्चन में मैक्सिमा भी निकालना था और मिनिमा भी निकालना था, इसलिए मिनिमम 2 पॉइंट पे आ रहा है 100 और मैक्सिमा 1 पॉइंट पे आ रहा है 0 और 200। इसलिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 400 at 0 to 100 vertex and minimum value of z is 100 at all the points on the line segment joining 0 to 50 and 20 to 40। अगर हम दो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं 0 से 50 और 20 से 40, सो टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन वी रिक्वायर मिनिमम 2 पॉइंट्स। सो the line which joining the 2 points 0, 50 and 20, 40 will be a straight line, and each and every point which is lying on this line joining these 2 points will be, the objective function will be minimum. So rest of the questions you just try it. In the previous class I had explained you about the two graph lines bounded region, then I had explained you about the unbounded region question, unbounded region. This was the unbounded question number 4. Question number 6 also was the unbounded, but there the value is coming equal, that also I explained you. You have to check it out. And the last one, that is question number 8. Here there are 3 equations are given. We have to plot the straight line graph for these 3 equations one by one. After plotting the graph of the first equation, we have to check arbitrary point and shade it by horizontal lines. Second one you can shade by vertical lines. Third equation graph line you can take the arbitrary point and you can do the shading by dotted dots or by slant lines, and the common part will be your feasible region, and this is a convex region, it is closed from all the sides, so this is a bounded region, feasible region. We will note down the points, vertex A, B, C, D. Objective function is given to us, z equals to x plus 2y. One by one we will calculate the values at these points, and we see that 100 comes minimum, 400 comes maximum. Minimum is at 2 points 0 to 50, 20 to 40, and maximum is at only 1 point 0 to 200. So the line joining the 2 points 0 to 50 and 20, 40, इस लाइन के ऊपर में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट्स के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम होगा।